Assalamu alaikum warahmatullah. Let us today begin with characteristics of this imbibition. But before that, in plant physiology, our previous topic was imbibition, where we discussed the absorption of water to surface colloids of a substance without forming solution. And you also know that imbibition involves two components. One component is called as imbibant, the substance which imbibes water, proteins, followed by starch, later on followed by the cellulose. The substance which absorbs this water, which is called as imbibant, and that water, that liquid, that universal solvent, which gets absorbed to this imbibant, this is called as imbibate. Whenever imbibition occurs, in my class, there are 3 golden rules you have to remember. Whenever imbibition occurs, there are 3 characteristics you have to remember. And what are those characteristics? This is our topic which we have to explain today. The first characteristics, the first golden rule, the first important point which you have to remember whenever imbibition occurs, sir, what is that? This is swelling of substance. This is swelling of imbibant. Due to swelling of this imbibant, जाहिर सी बात है, you have to remember that there is increase in volume of substance, increase in volume of this very imbibant. बेटा याद रखना है, हमारा टॉपिक है imbibition, जहां एक इम्बाइबेंट के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एक अटैचमेंट बनाता है, एड्सॉर्प्शन होती है यहां पे। और जब भी ये एड्सॉर्प्शन होती है, इसकी वजह से जो इम्बाइबेंट होता है, ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो होता है, इसकी स्वेलिंग होती है। जब स्वेलिंग होती है, जाहिर सी बात है, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मेरे बच्चे याद रखो, मैं एक pragmatic example आपके सामने रखूंगा. I will provide a practical example before you people so that you will gain the concept, a real concept of this imbibition. Are you getting this beaker containing the sisal seeds? Yes, sir, I'm watching. I'm getting this. This beaker contains the chickpea seeds. If you remember my class, previous class, मैंने उस टाइम बताया था, मैंने इस बीकर के अंदर ड्राई सीड्स रखे. Then I have added water. These pea seeds are rich in the proteins. अगर हम इनकी ओरिजिनल पोजीशन देखें बेटा, इसका वॉल्यूम बहुत कम था. बट अगर इनकी इम्बाइबिशन अब हुई है ना, आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व दिस सीड. Can you tell me there is hell of difference between the original position and this present position? Can you tell me ये imbibant है? It contains the what is called as the protein here. It contains the seed. Chickpea contains the imbibant in the form of proteins here. जब इन proteins ने, जब इस imbibant ने water को absorb किया, बड़ा यहाँ पे क्या हुई है? Imbibition. जब imbibition हुई है, पहला रूल है, यहां पे सबस्टेंस की स्वेलिंग हुई. जब सबस्टेंस की स्वेलिंग हुई है, कॉमन सेंस है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है? नो.
कांस्टेंट रहा है? नहीं। जब यहां पे एड्सॉर्प्शन हुई है तो इसका मतलब है देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दिस सबस्टेंस, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दिस वेरी इम्बाइबेंट, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दैट वेरी सीड। जो सीड स्वेल होते हैं, जो वुड स्वेल होगा नेक्स्ट एग्जांपल्स में, वो दरअसल इम्बाइबिशन की वजह से। सो इम्बाइबिशन में पहला रूल है, whenever it occurs here, there is increase in the volume of this very substance, there is what is called as swelling of that very substance. So पहला पॉइंट आपने याद रखा है, that was swelling of the substance. Second point, second golden rule, this is one of the important rules in my class. You always have to remember that whenever imbibition occurs, there is generation of a positive pressure. This pressure generated during imbibition, this is called as imbibition pressure. You call this as imbibition pressure. I will call sometimes this as metric potential. This metric potential is represented in the form of a Greek symbol psi m. M is written on the right side below. लेकिन याद रखिए सर, इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा बेटा। अगर मेरे पास एक बीकर होगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस बीकर कंटेन्स फॉर एग्जांपल इम्बाइबेंट, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, राइस, सीड, पी सीड और वुड। सर देन व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे वाटर ऐड करूंगा। बेटा जब मैंने वाटर को ऐड किया, जाहिर सी बात है यहां पे इन सीड्स ने वाटर के वॉल्यूम को कम किया और खुद अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। सो दैट मीन्स इनकी स्वेलिंग हुई है। अगर एक सबस्टेंस की स्वेलिंग होती है, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, जो ये सबस्टेंस स्वेल हुआ है, इसका मतलब है इसने इस वॉल पे, सराउंडिंग वॉल पे एक पुश जनरेट किया है, एक धक्का दिया है इसे। सो अगर इसने फोर्स अप्लाई किया एक खास एरिया में, इसका मतलब इसने प्रेशर को यहां पे अप्लाई किया। सो कहने की बात यह है कि जिस सीड की स्वेलिंग हुई है, इस सीड ने इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई किया है। दैट प्रेशर विच इज डेवलप्ड विद इन द सबस्टेंस, विद इन दिस सिस्टम ड्यू टू इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, प्लीज रिमेंबर दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर। सो एक इम्बाइबेंट जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करता है बेटा, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक वॉल पे प्रेशर जनरेट होता है। इसकी वजह से ये वाला जो सीड है वो इसकी तरफ आ रहा है, वॉल पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। जब वॉल्स पे प्रेशर जनरेट हो रहा है ड्यू टू इम्बाइबिशन, यू हैव टू क्लेम दैट दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर। सो आई विल क्लेम दैट इम्बाइबिशन प्रेशर इज दैट प्रेशर which is generated during imbibition। जब imbibition हुआ है, इसके दौरान जो एक प्रेशर जनरेट हुआ है, this pressure was actually on the walls, on the system, on the beaker, on the surroundings। इसीलिए you have to claim this pressure is positive pressure। जो पॉजिटिव प्रेशर होता है बेटा, याद रखिए वो ऑन द वॉल्स होता है। अगर आप एक बैलून लेंगे, बैलून इज एम्प्टी, इफ वी फिल दिस बैलून विद एयर, कैन यू क्लेम जो इसके रबर पार्ट्स थे, ये वाला पोर्शन था, इसका मतलब है अब इसकी स्वेलिंग हुई है। दरअसल इन एयर मॉलिक्यूल्स ने इन रबर बैंड्स पे एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया, इसकी वजह से स्वेलिंग हुई। जब स्वेलिंग हुई इसका मतलब है पॉजिटिव प्रेशर जनरेटेड। सो दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, ड्यूरिंग इम्बाइबिशन द स्वेलिंग ऑफ द इम्बाइबेंट जनरेट्स ए पॉजिटिव प्रेशर ऑन द वॉल्स, ऑन द सराउंडिंग्स। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर। प्लीज रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सर जो इम्बाइबिशन प्रेशर होता है, इट इज मेजर्ड इन पास्कल्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
It is measured in pascals. It is measured in megapascals. It is measured in bars. It is measured in atmospheres. But important point, botanically you have to remember that this imbibition pressure has very high value. It has very high magnitude. It can be around thousands of bars. जब भी इम्बाइबिशन होती है बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए इट कैन बी काउंटेड अमंग thousands of those bars here. Hence, one important point that the pressure generated due to imbibition on the walls within the system, this positive pressure is called as imbibition pressure here, which is measured in the pascals here. Please remember, इसका magnitude बहुत ज्यादा होता है. It is counted, it is measured in thousands of bars. That means अगर हम nature में imbibition pressure को measure करेंगे, अगर एक फिजिक्स टीचर मेजर करेगा इम्बाइबिशन प्रेशर अपनी फार्मूला को लेके, रिमेंबर ही विल क्लेम टू ए बॉटनिस्ट, ये बॉटनी सर को बताएगा, एक फिजिक्स सर बॉटनी सर को बताएगा, बेटा याद रखिए इसका मैग्नीट्यूड, याद रखिए काउंट करके दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड है thousands of bars. सो हेंस इट इज वेरी हाई. और याद रखिए अगर इम्बाइबिशन प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जो स्वेलिंग की वजह से होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आए हैं प्रीवियस पेपर्स में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में. पहली एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है बेटा, पहली इजिप्ट सिविलाइजेशंस थे, व्हाट दे वर डूइंग, वो क्या करते थे? इन ऑर्डर टू ब्रेक बिग बोल्डर्स, दे वर नॉट हैविंग द इंजीनियरिंग, इनके पास तो मशीन्स ड्रिल्स तो नहीं थे, लेकिन व्हाट दे वर डूइंग, इनके पास एक टेक्निक थी. सर व्हाट वाज दैट टेक्निक? मैं आपको बताऊंगा. ये इस रॉक में, इस बोल्डर में एक गैप बनाते थे, क्रेवाइस बनाते थे. देखिए हाउ वाइज दे वर, अर्लियर सिविलाइजेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द इजिप्ट. इसके बाद ये यहां पे एक वुडन पीस लगाते थे बेटा, लेकिन ड्राइड वुडन पीस, क्योंकि जितना ड्राई वुडन पीस होगा इतनी ज्यादा इम्बाइबिशन होगी, इतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, इतना ज्यादा स्वेलिंग होगा. प्लीज रिमेंबर, अब इसके पास ये वुडन पीस, ड्राई वुडन पीस अप्लाई किया. नाउ यू विल से, इसके बाद इस वुडन पीस में उन्होंने वाटर को अप्लाई किया. अभी आपने बताया जब इम्बाइबिशन होगी इस वुडन पीस के साथ, कैन यू टेल मी वॉल्यूम डिक्रीज होगा? नो नेवर. वॉल्यूम इंक्रीज होगा. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा यहां पे प्रेशर डेवलप होगा, यहां पे प्रेशर डेवलप होगा, यहां पे प्रेशर डेवलप होगा, इतना ज्यादा इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा. रिमेंबर कि ये जो बोल्डर है, दिस बोल्डर विल ब्रेक इनटू द पीसेस. हेंस अर्लियर इजिप्ट सिविलाइजेशन, द पीपल ऑफ इजिप्ट, remember they were using this very technique, imbibition technique, in order to break big boulders. Hence I will claim that it was used to break the rocks, it was used to break big boulders here by Egypt civilization. The concept was imbibition pressure. दूसरी एग्जांपल आपको मैं दूंगा. सर imbibition pressure कहां पे इस्तेमाल होता है? jamming of विंडो फ्रेम. सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा. यूजुअली जो रेनी सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन में जो विंडो नॉर्मली बेस्ट फिट होती है, लेकिन इस रेनी सीजन में ये जो विंडो फ्रेम्स या डोर्स होते हैं ये लॉक हो जाते हैं. सरवाए वो लॉक इसलिए हो जाते हैं, वुड इज इम्बाइबेंट, इसने वाटर को एब्सॉर्ब किया. जब वाटर को एब्सॉर्ब किया इसका मतलब है स्वेलिंग हुई. जब स्वेलिंग हुई, जब ये अपनी गैप में फंस गया है, जब ये अपनी गैप में फंस गया है, इतना इसने प्रेशर यहां पे डेवलप किया, स्वेल हुआ है, अब ये वापस कभी नहीं आ सकता है अनटिल एंड अनलेस जब ये बराबर वापस नॉर्मल पोजीशन पे, दैट मींस ड्राई हो जाता है. इसीलिए जो जैमिंग ऑफ विंडो फ्रेम्स होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस वाज आस्क्ड इन द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट्स हियर. This was, I have seen this question in JK common entrance test as well few years back, when there was no concept of the NEET exam here. Hence you have to say first breaking of the boulders, second jamming of window frames. It is due to what is called as imbibition. Third example,
Third point, where this imbibition pressure will be applied. Please remember this point here. बड़ा याद रखिए. I will give breaking of seed coat. Breaking of seed coat. Sir, what does that mean? I will give example. Suppose मेरे हाथ में ये सीड है. इस सीड का सीड ओव्यूल से बनता है. इस सीड का अपना कोट होता है. That is called as seed coat. अब ये जमीन के अंदर गया है. आफ्टर सम टाइम इस सीड के अंदर बेटा एम्ब्रियो होता है. क्या होता है? एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो बाहर निकलेगा, पिल्यूम्यूल से शूट बनेगा और रेडिकल से रूट बनेगा. लेकिन सबसे पहले सीड कोट बर्स्ट होना चाहिए. इसका सीड कोट जो होता है इसके अंदर इम्बाइबेंट होते हैं. जब इसके अंदर इम्बाइबेंट होते हैं, जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पे एड्सॉर्ब करेगा, एड्सॉर्प्शन की वजह से ये सीड कोट जो होता है इसकी स्वेलिंग होगी. इतनी स्वेलिंग होगी, इतनी स्वेलिंग होगी, जब बैलून सैचुरेट होता है बर्स्ट होता है. इसी तरीके से ये जो सीड कोट होता है जब इसकी सैचुरेशन होगी तब जाके ये बर्स्ट होगा. जब ये बर्स्ट होगा फाइनली एम्ब्रियो आसानी से बाहर निकलेगा. इसीलिए आपने याद रखना है, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट इन सॉइल्स is due to one important physical process. This process is called as imbibition. ये ब्रेक सीड कोट इसीलिए होता है क्योंकि स्वेलिंग की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है. दिस प्रेशर विल बी कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर. अगर आपने देखा होगा जो साइसर सीड्स होते हैं जब ये वाटर गेन करते हैं खुद ब खुद इनका सीड कोट जो होता है वो खुद ब खुद इनका वो बाहर निकलता है. क्योंकि ये जो सीड कोट होता है अगर ये बर्स्ट होता है एंड अल्टीमेटली इसमें इम्बाइबिशन प्रेशर जनरेट होता है. सो दो गोल्डन रूल्स आपने याद रखे. एक, ड्यूरिंग इम्बाइबिशन व्हाट हैपेंस दैट इज कॉल्ड एज द स्वेलिंग ऑफ द सबस्टेंस. सेकंड पॉइंट, देयर इज जनरेशन ऑफ द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर, आल्सो कॉल्ड एज metric potential. This has a value that is it is of high magnitude, hence it is used for number of the purposes within the botanical world. That means a plant uses seed uses in order to break its seed coat, or normally jamming of window frames, or it was used by the early Egyptians in order to break the rocks or break the boulders here. Third golden rule you have to remember for this imbibition. Sir, what is that? That is generation of the heat. This is called as heat of wetting, or this is called as heat of hydration. बेटा मैं समझाऊंगा. What do you mean by heat of wetting or heat of hydration? इसके लिए I will simply take a beaker. मैंने बीकर को पकड़ लिया. अब पकड़ने के बाद यहां पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स को रखा. दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स. सर वाटर मॉलिक्यूल क्या है यहां पे? वाटर मॉलिक्यूल इज इम्बाइबेड. जरा बेटा मुझे बताइए, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास डांसिंग एनर्जी है. कैन यू क्लेम व्हाट इज दिस डांसिंग एनर्जी? दिस डांसिंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैंने इस बीकर के अंदर एक इम्बाइबेंट को डाला है, एक सीड को डाला है बेटा. सर जब सीड को यहां पे डाला है इसका मतलब है ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी दिखाते थे अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे एडसॉर्ब हो जाएंगे. अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जिनके पास रैंडम काइनेटिक एनर्जी थी, रैंडम मोशन था, अब इनकी बाइंडिंग की वजह से, एडसॉर्प्शन की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है कि कम हुई है? इट इज डिक्रीज्ड. क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी अब ये काइनेटिक एनर्जी एडसॉर्ब हो गई. अब यही काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए हैं टुवर्ड्स इम्बाइबेंट. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एनर्जी कैन नीदर बी created nor destroyed but can be converted from one form to another form. बेटा काइनेटिक एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये रीअपियर होगी. इट्स नॉट what is called as the normal biology. This is thermodynamics, that is in the form of first law of thermodynamics. इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे कम हुई है, that means decrease in the kinetic energy, यही कल जाके रीअपियर होगी. सर किस फॉर्म में? It will exist in the form of heat energy.
इसलिए जब भी इम्बाइबिशन होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड होते हैं, बाइंडिंग के दौरान दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी कल जाके एक नई फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। वो फॉर्म जो यहां पे एग्जिस्ट होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। वो हीट जो यहां पे निकलती है, दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ वेटिंग। सो हेंस आई विल क्लेम ड्यूरिंग इम्बाइबिशन water molecules bind. Okay, nice. Then they lose or they decrease kinetic energy. Then, as per first law of thermodynamics, energy can neither be converted, created, nor destroyed, but can be converted from one form to another form. इसीलिए जो यहां पे हीट, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, kinetic energy is released in the form of heat energy. So that heat energy released during imbibition, that is called as heat of wetting. The best example, you can observe this heat energy, although we can't measure it, but whenever kneading of flour occurs, जब हम फ्लोर को लाते हैं, आटे को लाते हैं, then we try to knead it using my blows. At that time, remember, this flour absorbs water and heat energy can be generated. It can be observed by this baker here when he goes for kneading of the flour. So hence these were three golden rules which you remember during imbibition. Rule number first was swelling of the substance, second was generation of the pressure, and third was release of the heat, that is from the kinetic energy. This is called as heat of wetting or heat of hydration. आज मैं ये भी कंप्लीट करता हूं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आवर टॉपिक विल बी कंटिन्यूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।